All right. सभी को नमस्कार. Uh, I can see that there are few who have joined in the Zoom and some are watching on the YouTube live. A very warm welcome to all of you. Yeah. So I can see Sandhya ji and Monica have joined. जी. So जो भी हमने अब तक किया, whatever we have done in this sort of last maybe 1.5 month or so. Any doubts or any questions you have? Maybe we would like to take that first. And today we would actually try to have few rollers. Cylinder के ऊपर हमने कुछ rollers तैयार किए हैं. Let's say for example we wanted to see that कि उनको जब हम मिट्टी में चलाते हैं, what sort of impressions you are get, and can we try to have that visualizations exercise first physically and maybe over GeoGebra as well. So that's what we have thought today. But before that, any doubts you have till I mean regarding the discussions we had in the previous sessions, maybe you can share it now, and waiting for a couple of more minutes to start with the things we wanted to discuss today. Yeah. जी, कोई भी सवाल हो, काही पण सवाल होय, बिल्कुल you can ask, or anything you wanted to share, anything you have built, anything you are trying to do, anything new things you have made, would love to hear your experiences. नहीं? ठीक है. ऑलराइट, कोई बात, चलिए. सो ये है आप सभी के लिए पहला सवाल. सवाल ये है कि मान लीजिए सिलेंडर के ऊपर मैंने चूड़ियां लगा दी. So I have a circles mounted on a cylinder, and of course the circle is parallel to the, let's say, base circle of a cylinder. So and then if I roll it on a sand, उसको मैं अगर जमीन पे चलाऊंगा, so question is what are the traces which I will get? Let me once again try to, just a second. Let me try to share my screen first. Okay, I can see some answers in the chat box. Let me try to share my screen. Here you go. There's a bit change in the interface of the Zoom. That's why I'm struggling to find my options. Here. Now. Here. Well, so let's say ये जो सिलेंडर है, यहाँ पे हमने सर्कल्स माउंट कर दिए हैं. So these are bangles on the top of the cylinder, something like this. The question is कि इस सिलेंडर को जब मैं चलाऊंगा मिट्टी पे तो क्या बनेगा? All right, and let me try to roll this. As I can see, Sandhya ji is saying, Sandhya ji feels that it would be a circles. Let me see if in the chat is there any other responses? Where do I find them? Okay, here.
Okay, so Sandhya ji feels it's a parallel line. By one of the circle it would make a line, and there are multiple circles, so it would form a parallel line. Any other thoughts you have? Let me also check on the YouTube. क्या सवाल है? सवाल ये है कि मेरे सिलेंडर के ऊपर मैंने सर्कल्स लगाए हुए हैं, और कैसे सर्कल्स लगाए हुए? दे आर पैरेलल टू योर एंड सर्कल्स, द क्लोजिंग सर्कल्स ऑफ सिलेंडर। वहां पे मैंने ये लगाए हुए हैं, और फिर मैं उसको मिट्टी पे रोल कर रहा हूँ। क्वेश्चन इज व्हाट यू वुड गेट एज एन आउटपुट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी वंस अगेन टेक यू टू माय जियोजेब्रा इंटरफेस, और इसको एक बार चला के देख लेते हैं। As Sandhya ji is pointing it, it would be a straight lines. Why is it a straight line? Because देखिए जब आप रोल कर रहे हैं, let me consider these axis, this axis as an x-axis and this is an y-axis. So when the circle is rotating and what you are getting at a trace, तो जहां पे भी ये सर्कल ग्राउंड पे टच हो रहा है, so it would be touching, assuming let's say it's touching at a one point, तो वो जो वन पॉइंट है वो एक्स में कितना बढ़ रहा है और वाई में कितना बढ़ रहा है वो हमें निकालना है, एंड दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। सो एज यू कैन सी व्हेन द सर्कल इज रोटेटिंग, इट्स नॉट मूविंग, आई मीन अज्यूमिंग कि ये सिलेंडर is rotating at a direction of perpendicular to what the cylinder's axis is, तो वहां पे इस डायरेक्शन में ये रोल हो रहा है। तो जो सर्कल है उसका वाई डायरेक्शन में, मतलब वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है ना, इट इज फिक्स and it is rotating, it's moving towards an x direction. That's why a straight line. Now the question is, instead of a circle, now the question is, I have, let's say, a spiral, and what is a spiral? Just like a spring. This is your spiral. All right, now the question is, if I roll this, what will be the output? ट्रेस क्या मिलेगा इसका? अभी तक हमने क्या देखा था? मेरे पास एक सिलेंडर था, उसके ऊपर मैंने सर्कल लगाए हुए थे और उनको मैंने रोल किया, एंड वी आर इंटरेस्टेड इज व्हाट विल बी द ट्रेस ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर टचिंग टू द ग्राउंड। उसको अगर मैं मिट्टी में चला लूं, लेट्स से बेलन है, बेलन के ऊपर मैंने मान लीजिए छोटे छोटे सर्कल्स लगा दिए, और फिर अगर मैं उसको रोटी के ऊपर चलाऊं तो वो मेरी रोटी के ऊपर क्या बढ़िया क्या पैटर्न मिलेगी? सो दैट दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, इजंट इट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मान लीजिए उसके ऊपर मैंने स्प्रिंग लगा दी, एक स्पाइरल लगा दी। क्वेश्चन इज कि व्हाट विल बी द आउटपुट if I roll that? Okay, Sandhya ji feels it's a triangular lines. Monica says it's a wave. Monica, आप थोड़ा और बताना चाहोगे? I mean, which sort of wave? Because there can be many types of wave. हाँ, किस प्रकार के तरंग मिलेंगे, किस प्रकार के वेव मिलेंगे? Ashok ji, Hari ji, any thoughts you have about what will be the output if you मान लीजिए स्प्रिंग लगा दी, स्पाइरल लगा दी बेलन के ऊपर, और फिर उसको अगर हम रोटी के आटे के ऊपर चला रहे हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट? मैं बीच बीच में गायब हो जा रहा हूँ। अच्छा, लेट मी सी सर इफ आई वो कैन। स्प्रिंग और गर्त की तरह ऊपर नीचे वाली वेव। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, लेट मी ट्राई टू चेंज माय फिल्टर्स। Sine wave, I think. ओके ओके, ऑलराइट। Okay, so there are thoughts like sine wave, some wave. ठीक है, एक सेकेंड है ना, चला तो एक बार। आई थिंक दिस शुड बी फाइन। ठीक है ठीक है, थैंक्स यार।
मोनिका आप क्या कह रहे थे? फिर से यस एक बार सर। मेरा, हाँ बताइए। हाँ सर, वो वेव जो रहती है तरंग श्रृंग और गर्त के फॉर्म में, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो ऊपर नीचे। ट्राइंगुलर ट्राइंगल ट्राइंगल वाला जो बनता है वो वाला के फॉर्म में ऐसा? आ, नहीं। हम्म, वो साइन वेव जैसा, हाँ हाँ मतलब राइट। कर्व है, सीधा नहीं है। हाँ करो। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ओके। और किसी का मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ कि यूट्यूब में क्षमा जी हैं, शी इज सेइंग साइनोसोडियल, एंड देन अनुसरणा जी हैं, शी फील्स इट्स अ क्रॉस पैटर्न्स, ओके। आर्यन है, he feels very interestingly parallel lines, okay, that's quite an interesting. Any other thoughts? Was the parallel lines the answer for the previous question, or this one? I'm not sure about that. Then there is this transverse waves. Anusarana ji is शेयर स्क्रीन ऑफ कर ब्लैक okay. तो डायरेक्ट नॉर्मल कैमरा और जे जूम ऊपर से है ना। अच्छा, और क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, और अच्छा ये वाला ही रखें, एंड फिर स्लाइड्स दिखाना होता। इसको ओबीएस से चेंज कर। अच्छा, ओबीएस का वर्चुअल का इनपुट ले लें ऐसा, अभी वर्चुअल इनपुट होगा। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, ठीक है, चलो तो एक बार करके देख लेते हैं। लेट्स सी, माय बैड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने एक स्पाइरल को जो है वो सिलेंडर के ऊपर रोल किया हुआ है, एंड व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज इन कि भाई अगर मैं इस सिलेंडर को रोल करूं तब जमीन पे इसके क्या ट्रेसेस होंगे। ठीक है, एंड लेट मी जस्ट प्ले दिस। It is lines. These are bit slanted compared to the perpendicular of the axis of cylinder. तो पहले जो मिल रहे थे उसके कंपैरिजन में दिस इज, सो ये पहले मिल रहे थे मुझे, दीज आर द स्ट्रेट लाइंस फॉर द सर्कल्स, बट अभी जो मिल रहे हैं वो स्लांटेड मिल रहे हैं। सो सो that's the difference, but these are also a, but these are also lines which you are getting when you are rolling a spiral, and why is an interesting part. That's what we wanted to sort of look at this particular spiral. The spiral is very interesting. What is about what is so interesting about them? आप इसको यहां से देखें तो इट्स अ सर्कल। अगर मैं स्पाइरल को, आपकी स्प्रिंग को साइड से देखो, दिस इज योर स्पाइरल ऑन अ सिलेंडर, इसको अगर मैं साइड से देखूं तो ये एक सर्कल है। If you look at from this angle, it's actually a sinusoidal wave. And if you try to visualize the trace, it's also actually a line. So your spiral, in some sense, from one of the perspective, it's a circle. From another perspective, it's actually a sinusoidal wave. And at the same time, it's also making a lines in a trace। और किस तरह से और ये लाइन क्यों बन रहा है, तो इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी टेक बैक इट टू इट्स इनिशियल पोजीशन। हमने जो रोल किया है, वो रोल का जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अ सिलेंडर, इजंट इट? ठीक है, अब मुझे कैसे पता करें कि इसका ट्रेस क्या मिले, हाउ डू आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई स्पाइरल का जो ट्रेस है वो लाइन कैसे मिला। तो उसको समझने के लिए हमें दो चीज देखनी पड़ेगी। क्या दो चीज देखनी पड़ेगी? पहला जो चीज देखना है वो ये है कि वो एक्स में कितना चला। अगर वो एक्स में जितना भी चला उसके उसके रिस्पेक्ट में वाई में उसमें चेंज क्या होगा ना। इफ आई कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप, दिस विल हेल्प मी टू, फिर से इसका जो क्रोमा की है that setting is somehow getting changed. Just a second, just give me a second. No, this is better. तो मैंने जब इसको रोल किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव रोल इट फॉर थीटा एंगल, मान लीजिए 30 डिग्री इसको रोल किया सिलेंडर को जमीन के ऊपर। सो जो एक्स डायरेक्शन में
जो बड़ा होगा, लेट्स से द सिलेंडर इज रोलिंग इन दिस डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में कितना चला है, थीटा आर, एंड उसकी रेडियस अगर 1 मान लो तो थीटा जितना एक्स डायरेक्शन में चल रहा। आई वांटेड टू डिराइव हाउ मच it has moved, the point has moved, the touching point has moved in the y direction. That is what my interest is. If I can derive that, I would be able to understand what will be the nature of the trace I will get, or what sort of curve I will get. In this particular specific case, the definition of a spiral says that कि आप यहां पे देखें इस सर्कल में, सो आप इवेंचुअली इस पॉइंट से देखें तो दिस द पॉइंट ऑन अ स्पाइरल, इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन अ स्पाइरल, आप बॉटम से लेके अगर ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपको इस पर्सपेक्टिव से, इस व्यू से आपको दिखेगा कि वो पॉइंट है वो सर्कल में मूव हो रहा है. What I'm interested is, I wanted to take a point which is starting from the bottom of the spiral and it is going upwards. स्पाइरल में वो ऊपर चढ़ रहा है, तो उस पॉइंट को आप यहां से देखेंगे तो वो आपको पॉइंट सर्कल में रोटेट होता हुआ दिख रहा होगा, विच मीन्स लेट्स से उसका एंगल चेंज हो रहा है. लेट्स से इट हैज मूव्ड 30 डिग्री फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. मतलब आप अगर सर्कल में देखें तो वो 30 डिग्री जितना यहां से घुमा है. वी आर इंटरेस्टेड इनटू कि भाई अगर 30 डिग्री घुमा है तो वो ऊपर कितना चढ़ा होगा, बिकॉज नाउ यू सी कितना ऊपर गया है, दैट वुड टेल मी हाउ मच इट विल मूव इन अ वाई डायरेक्शन. एंड द डेफिनेशन ऑफ अ स्पाइरल सेज दैट आप कितना डिग्री घूमे हैं स्पाइरल में, उसके लीनियरली प्रोपोर्शनल में आपको ऊपर चढ़ना है. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्पाइरल और हेलिक्स. That relationship has to be linear. Either आप 30 डिग्री चले हो, थीटा चले हो, तो डबल उसके प्रोपोर्शनल में चल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू, आप 30 डिग्री टू 60 डिग्री में गए तो और कितना ऊपर जाना है, जो पहले गए उससे डबल जाना है. दैट कैन बी द केस. इट कुड बी द सेम प्रोपोर्शनल, इट कुड बी द ट्रिपल ऑफ द प्रोपोर्शनल, बट इट कैन नॉट बी अ स्क्वायर प्रोपोर्शनल. द चेंज इन द हाइट इस सिलेंडर में आप ऊपर कितना चढ़े हो, दैट हैज टू बी लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू हाउ मच यू हैव मूव्ड इन एन एंगल, and the angle is the same as what you are moving in the x direction. So इसलिए the definition of an helix, you can, I mean you can say that this is how you are getting a straight line, because that's the definition of a helix, says that कितना आप theta degree change हुए हो, if you look at from the top, with that same proportional you have to move up in an height. So in some sense it's also a line. Your helix, your spiral is also a line in that sense, and that's what you are getting when you are rolling it in a center. Next question is that मान लीजिए अब आपने इसमें जो है वो सिलेंडर को टेढ़ा काटा है, and the cross section of a cylinder will give you an ellipse. मान लीजिए उस ellipse को थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया. Now you are rolling it in a sand. Question is what you will get as interest. What you will get as interest when you're rolling it in a sand. फिर से सवाल दोहरा देते हैं. मान लीजिए सिलेंडर को मैंने टेढ़ा काट लिया और फिर क्या कर रहे हैं, उस सिलेंडर को मैं रोल कर रहा हूं. What we are interested is in what will be the trace of that cylinder. You wanted to take a time and share what are your thoughts? This time I think it's sine wave. All right. Sandhya ji feels it's a parallel line. All right. Let me see if there are any YouTube responses as well. All right. Vijay ji आज जुड़े हैं. Wonderful. Okay. Any other thoughts you have? क्या है सवाल? सिलेंडर को टेढ़ा काट लिया है और उसको मैंने, that would be an ellipse, और उसको अगर मैं रोल करूं जमीन पे, question is what I will get as interest. When you had a circle, you get a straight lines. When you had a spiral, you get a slanted line. The question is कि अगर सिलेंडर को टेढ़ा काट के फिर उसको रोल करें, what will be the output?
me see if I can show you the actual centers. Just a second. ठीक है. Let me share my screen once again, and let me also see. Sandeep ji feels it's a sine wave. So is Hari ji. Sandhya ji feels it would be a parallel line. And is there any other responses? Neerav ji feels it's a cycloid. Very interesting. Okay. ठीक है, चलो एक बार रोल करके देख लेते हैं इसे. So when you roll it, you actually get a sine wave. And या फिर ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर मैं कागज का कोई रोल बना के उसको स्लांट कट करके फिर खोल दूं, you actually exactly get a sine wave. This is your wave. And we would also in an upcoming sessions we would try to prove कि ऐसा क्यों होता है कि let's say for example ये जो change हो रहा है, ये point की जो position change हो रही है, that is a function of a sine. How come that? Can we prove that this would be an exactly sinusoidal wave? वो कैसे करेंगे? Maybe we would like to take it up into one of the session. ठीक है, आज क्या करने की कोशिश करेंगे? So the idea for today is we wanted to create a spiral on a cylinder. Then we also wanted to create a spiral on a maybe a cone, and we would try to understand the relationship of how these are getting changed, how the x, y, z quantities are getting changed. That is the exercise we wanted to do. All right, ठीक. So for those just let me repeat it up our initial steps. मान लीजिए आपको GeoGebra में कुछ भी बनाना है. First step you wanted to do is go to the GeoGebra website. If you not have already logged into your account, maybe you wanted to create whatever work you do. आप जो भी इस पूरा काम करेंगे वो सारा है आपका इस GeoGebra में स्टोर हो जाएगा. जितने भी एप्लीकेशंस बना रहे हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे. आपने जो पहले की बनाई हुई है वो चीजें आपको देखनी है. You maybe wanted to click on your profile. I am right now have created the profile of Center for Creative Learning, and that's what I'm opening. तो आपने जितना भी काम किया, whatever work you have done will be all visible to you in your when you click on your profile. Also, you can make it public so that anybody who wanted to sort of access it, if somebody wants to have a look into that, they can look that work. If you wanted to create your own, मतलब अब आपको कुछ बनाना शुरू करना है, then maybe click on the start calculator. The moment you click on it, आप देखेंगे कि इसमें आपको दो प्रकार की विंडो दिखाई देगी. The left hand side where your cursor is clicking, ये कमांड विंडो है. That's where you type your algebraic commands and parametric equations and whatever you wanted to do, whatever your commands are there, वो यहाँ पे रहे आप लिखेंगे. The right hand side you see is a graphical window. As of now this is a 3D calculator if you wanted to make a 3D thing. If it's a 2D, depending on which sort of work you wanted to do, यहाँ पे ये जो ऊपर calculator का option है वहाँ पे click करके maybe you wanted to see, let's say if you wanted to do the 2D, maybe you wanted to select a graphing thing. If you wanted to right now we would try to create a 3D stuff. So I'm opening the 3D calculator. ठीक है. Along with the algebraic and command inputs, it can also have a GUI tools to create a lot of stuff. मान लीजिए आपको क्यूब बनाना है, पॉइंट क्रिएट करना है, तो आप GUI से कर सकते हैं. But I would strongly insist to work on the
the command based options. The reason is key most of the stuff you wanted to create, the visualization exercise you wanted to do, the lot of experiment you wanted to do, the commands can give you a lot more leverage compared to your GUI. All right. तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे सिलेंडर बनाना है. So for that, let's say the command for the cylinder is spelling of cylinder, and then in the cylinder you mention कि भाई उसका base circle क्या है और height क्या है. That could be the one of the option. The another option is कि उसका top और bottom point बता दीजिए और radius बता दीजिए cylinder की. That's how I can also create a cylinder. So let me try to define it कि इसका जो base circle है उसका point क्या है. Let me take that as 0, 0, 0. The x, y, z all are 0. This is the origin point. The another point I would try to take it up at of height 1. So let me take this as in 0, 0, 1, so that the axis of the cylinder is a z axis and the radius is, let's say, 1. So this is how my cylinder has been created. It has of a radius 1 and also the height as 1. थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं मैं. सर स्क्रीन ब्लर on क्या हो गया? screen It is looking not clear. It's looking blur. It's looking blurred. Blur. Blur. Okay. अभी भी blurred ही दिख रहा है? Yes, sir. Yes. Or now is it okay? No, sir. yes, yes, it is very no not clear. The commands are not very clear. Command Yes, yes. size को बड़ा कर दें. अच्छा अच्छा ठीक है. All right. So let me make Your window total window are on a blur only, not अच्छा clear. अच्छा. All right. All right. Total Let me window. see. All right. Okay. Let me see. Just a second. I see. Is it better? Is this better? Yes, sir. Now Very it's clear. Better? Okay. Okay. Fine. Sure. So, so this is your cylinder. थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ. ठीक है. So ये मेरा cylinder बन गया. The next thing I wanted to do is I wanted to draw a spiral. The next thing I wanted to do, I wanted to draw a अब मुझे इसके ऊपर let's say for example एक circle बनाना है. I wanted to, let's say, create a circle at the half height of this particular cylinder. So one option is that I can, let's say, type in command circle. In the circle, I have to mention that if it's in a 3D,
So if it's in a 3D, I have to mention what is the center of a circle, what is the radius, and a direction. So if it is at the half height of a cylinder, then its center would become, of course, its x direction. I mean, x coordinate is 0. The y coordinate is also 0. जो उसकी height है, वो cylinder से आधी height है. और cylinder की height 1 है, तो ये वाला हो जाएगा आधा. That's its origin. रेडियस कितनी है? जितनी सिलेंडर की रेडियस है, तो वो हो जाएगी 1. डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन लेट मी कॉल इट एज z axis. And that's how you get your circle. So this is one of the way of drawing a circle at a half height of a cylinder. Let me also try to do it in another way, and I'll come back to the reason why I wanted to do it that way. I can also write a curve. What is the curve? The curve says that कि मुझे, क्योंकि ये 3D में है, तो ये 3 पैरामीटर्स बता दीजिए x, y, z में. और just like as we have seen in the last session, the circle is a one parametric thing. It has one of the dimension, one of the parameter. And what is that parameter? The angle, the change in the angle. Rest all is a constant. So for example, in this particular case, the x expression can be, for a circle, it is the change in the x is the cos of a given angle. So let me write that as a cos. For an example, angle is, let's say, A. The change in y is the sine of some angle A. How about the z? For the circle which I wanted to draw on a cylinder in this particular case, तो उसका जो z axis है वो constant रहेगा. If it's at a half height, it would be 1/2, because the height of a cylinder is 1. What are the parameter I'm using? Only one parameter I'm using, that is the angle A. Its start value is 0. The next value is 2 pi. Let me once again repeat what we are trying to do here is, हम जो है जैसे हमने पिछली बार देखा था, circle is a one parametric thing. Rest all is constant for it. The only change for a points on a circle is the angle is getting changed. उसका जो center से दूरी है वो constant है. It's the angle which is eventually getting changed. 0 degree, 30 degree, 60 degree, all the infinite angles which you can have, that is what my circle has. So this is how I have defined my curve. अभी मुझे क्या चाहिए था? मुझे सिलेंडर की half side पे I wanted that, मुझे क्या चाहिए था? सिलेंडर के half height पे I wanted to have that particular circle. So how the x parameter is changing, how the x expression is changing, or the x coordinate is changing, that is the function of cos, as we have seen in the last session. So cos of that particular parameter, the angle, that's the only parameter we have. How the y parameter or y expression will change, or the y coordinate will change, that will be the sine of the same parameter of our angle theta. And how about the z? Z is constant. उसकी जो height है हर point के लिए, हर point की जो ऊंचाई है xy plane से बराबर है, that's the 1/2. That's a half of the height of a cylinder. वो constant है. This is how I have defined my parameters of this particular curve. ठीक है. अब इसी सर्कल को मुझे चाहिए कि let's say वो टॉप पे पहुंच जाए, then only thing I have to change is its z parameter, then it would be on the top. If I want it to be the base circle, the only thing I wanted to change, it's once again a z parameter. इसको 0 कर देंगे, तो ये काला वाला जो है वो सर्कल है वो नीचे पहुंच जाएगा. ठीक है. इसको कुछ अलग कलर से भी कर देते हैं. Let's highlight it. This is your circle which you have defined with the parametric equation. Now what I want is, instead of a circle, I want to have a spiral or a helix, a spiral on a cylinder. Question is, how do I do so? क्या करना है मुझे ये जो सिलेंडर है, ये मेरा जो बेलन है, उसके ऊपर स्प्रिंग लपेटनी है. कैसे करें? What should I change?
what parameter I should change in this particular curve to get a spiral on a cylinder. Any thoughts? Any? Can anybody help me with that? Angle. Angle of angle, the angle parameter, let's say A, which we have used here, वो change करना चाहिए. Angle Yes. A and B, I think, sir. Sine Okay. angle and cos angle. Different we will take. Okay. Any other thoughts? Then we would take the inputs from Sandhya ji and we would change that command here, और फिर वो change करके देखेंगे. Any other thoughts? Question is, सर्कल का तो मुझे समझ में आ गया. क्वेश्चन है कि स्पाइरल कैसे लपेटे सिलेंडर के ऊपर. सर्कल को ऊपर नीचे करना है, वो भी समझ में आ गया. But how will the spiral's parameter will change? That's the question. That's what we want to do. 1 plus cos A or 1 plus sin A, that like we will take, sir. 1 plus cos A, 1 plus sin. Instead of ठीक है, चलो. cos A plus 1 something. ठीक है, चलो करके देखते. Let's try to, and that's the fun with the GeoGebra. The idea is whatever our thoughts are, everything we can experiment, everything we can try. Yeah. First, Sandhya ji, what should I change here? Should I write it 1 plus cos A and 1 plus sin A? Yes, sir. All right. It will be displaced. Would anybody from the audience would like to guess what will happen? Yeah, somebody was saying something. The circle will be displaced. Circle will be displaced, and why is it so? Actually, 1 plus means it will move to in the same, not say upside. It will go to the x and y and on the plane of the Right. xy only. It will be displaced. Right. So as of now, the center of this circle or a curve has been assumed to be 0, 0, 0. Now, when you say it's 1 plus something for the x expression, 1 plus something for the y expression, its origin will become 1, 1, 0. It has moved in an x plus xy plane. All right. What are the other alternatives? और क्या change कर सकते हैं? इसमें तो सर्कल डिस्प्लेस हो रहा है. मुझे चाहिए कि वो ऊपर चढ़े. Cos A plus 1, sin A plus 1. Wonderful. Let's try this as well. Cos A plus 1. A plus sin A plus 1. All right. Any guess or thoughts on what will be the output for this? What will happen if I press the enter? What will be the output? एंगल चेंज होगा सर. Angle change of? एंगल चेंज होगा. किसका एंगल चेंज होगा? सर्कुलर Is पॉइंट्स. this an angle? हाँ, तो A is मतलब क्या angle. दिखेगा? सर्कल टेढ़ा हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, सर्कल ऊपर चला जाएगा, सर्कल ऊपर चढ़ जाएगा. क्या लगता है क्या होगा? Very interesting. What I will say is nothing will change. And this is why so, because let's try to understand this. मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ. Instead of I'll go back. I mean go one step back. What I'll do is instead of going from 0 to 2 pi, let me make it 0 to pi. Can anybody guess what will be the output of this curve? अगर मैं जो एंगल है it would be a semicircle. ठीक है. 0 to 2 pi मतलब पूरा. और आप देखेंगे कि 0 to let's say for example pi है तो आधा जाएगा. अच्छा, मैं यहाँ पे अगर 0 ये जो a है उसकी जगह इस पे प्लस पाई बाय 2 करूं और यहाँ पे भी प्लस पाई बाय 2 करूं तो क्या होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट? One semicircle reverse side. But reverse side or directions different, sir. Opposite directions will come. Opposite, or because it's a 90 degree, it would be rotated. You are right, but it would be on the exactly reflected. अगर मैंने पाई डाला होता 180 डिग्री डाला होता तो
बिल्कुल उसका उल्टा सर्कल हो जाता। और अभी मैंने क्या किया, 90 डिग्री किया, तो वो जो है वो 90 डिग्री रोटेट हो गया। So previously it was starting from an 0 to pi. Now it has started from pi by 2 to 3 pi by 2. That's it. If I do, let's say for example, instead of pi by 2, if I do a pi, then as you were suggesting, this would be turn out to be a 90 degree rotation. जो पहले था उससे कंपैरिजन। ठीक है। If I do the +1, then what will be the output? फिर क्या होगा? It would be just rotation. Whatever one radian value, whatever equivalent degree to that, उतना डिग्री घूम जाएगा। 1 जितना रेडियन है, that would be somewhere around let's say pi by 3 जितनी वैल्यू हो जाएगी, तो वो 60 डिग्री जितना कुछ रोटेट हो जाएगा। That's it. That's it. And when you say this value is going from, so instead of starting from value 0 to pi, 0 to 180 डिग्री जाने की जगह पे वो 60 डिग्री से लेके 260 डिग्री तक चले जाएगा। This is 0 डिग्री, this is x axis, तो ये 60 डिग्री यहां से घूम गया। ठीक है। अब मैं बोलूं कि instead of going from 0 to pi, you go from 0 to 2 pi, so what it will does is it will start from a 60 degree and eventually it will move the 360 degree plus 60 degree, तो वो complete circle कर लेगा। So changing in the angle have not helped me to make it a spiral. Adding a constant to the x and y expression has not helped me to make a spiral. Question is now what I do? क्या करें अब? Sir, cos angle different and sin angle different, I think. क्या करें? क्या change करें? Different Cos मतलब? A, sin B. Two expression? Uh, You wanted to use two expressions? Two Yes, sir. variable? yes, All right. sir. So now in a spiral also, spiral is also in one expression. How come it's a one expression? Because you see the moment, so what you, unlike a circle, what spiral has. So circle ko jo hai, for example, one of, let's say if it is sitting on the base of a cylinder, तो उसका z कुछ नहीं है, z constant है, isn't it? Unlike an expression, the z उसकी height है, वो भी हर point की height भी change हो जाती है. But go back to my previous statement, what I have said, the definition of a spiral says कि the h is not an independent, मतलब आप spring को कैसे भी नहीं खींच सकते. You have to the spiral, the definition says that whatever angle you have moved, the spiral, I mean how much you have moved in height has to be linearly proportional to that. So let me say is that कि let's say for example आपने अगर थीटा इधर चेंज किया है, अगर आप इस पे 2 पाई मूव हुए हैं, तो आपको हाइट में भी मान लो 2 पाई ही मूव होना है. So in that way the change in this circle and spiral is the same, कि वहां पे मैं हाइट नहीं बढ़ा रहा हूं, ये जो पॉइंट है जो घूम रहा है उसकी, इसकी बस मैंने हाइट बढ़ा दी, बट इंडिपेंडेंटली नहीं, not with respect to two variables. We have to find out the relationship between the angle and as well as height. Yes, question is what should I, let's say for example that that relationship is constant, मतलब जितना आपने एंगल घुमाया, मान लो a है, उतना ही हाइट में बढ़ेंगे. Let's say that is the case. Question is यहाँ पे हम क्या करें? Can I Changing, sir. angle क्या करें Any चेंज करके? interval side, I think. 0 to 2 pi that है. उसको क्या करें चेंज करके? Any thoughts on the YouTube? Let me see that as well. हाँ, The height is somebody was also saying depends something. on the height also is depending on the angle. So can we take that angle as, I mean, height also as a? Oh, that's a very nice suggestions. Height in z-axis, zigzag line. Okay, just a second. Huh? Ankur ji is saying some things. All right. Somebody is asking me कि JEE advanced के लिए guide कर दीजिए. I am not sure whether I'm the right person for that. The idea what we are trying to have the discussion in most of this session is about, can we
sort of can we start looking the math in a different way? I'm not sure how much this sort of questions will gonna help you directly to the JEE, but the idea is that the basic understanding for all sort of JEE questions comes, can we start do at a very fundamental level. So I'm not sure how much of this sort of questions would you have in your direct JEE examinations, but at least this foundation is something where you go and try to understand various concepts in an 11th and 12th grade. All right, coming back to our discussion, somebody was saying कि देखिए आप h कितना बढ़ा रहे हो, z एक्सप्रेशन अभी तो आपने 0 रखा है, या तो फिर आप कुछ कांस्टेंट कर देते हो जैसे कि आधा. तो अब मैं कुछ ऐसा कर देता हूं कि ये जो चेंज हो रहा है सर्कल में तो वो कांस्टेंट है जिस तरह से हम सिलेंडर पे ड्रॉ कर रहे हैं, इसको अगर मैंने जिस तरह से मेरा एंगल चेंज हो रहा है उसी तरह से मैंने अगर इसको बना दिया, एंड इफ आई डू सो, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट. सो नाउ it has started from so this is your circle only from 0 to 2 pi. इसने यहां से नीचे से शुरू किया और कितने h तक गया, ये जो है वो ऑलमोस्ट 2 पाई जितनी ऊंचाई पे चला गया, जबकि मेरे सिलेंडर की हाइट तो एक ही है. सो वी हैव स्टिल सीम्स लाइक यू हैव गॉट समथिंग लाइक अ स्पाइरल. अगर इसको मैं थोड़ा और बढ़ा दूं 2 पाई की जगह अगर मैं 6 पाई कर दूं, सो यू कैन हैव अ मोर टर्न्स ऑफ अ स्पाइरल. तो लग तो रहा है कि मेरी स्पाइरल बन रही है. हाँ, it seems like a spiral, but I wanted कि भाई ये जो let's say just a second, but मुझे चाहिए कि मेरी ये स्पाइरल है वो इतनी ऊपर नहीं चली जाए. It should be wrap around the cylinder only. ये तो बहुत ऊपर चली गई, 2 पाई तक चली गई. And if you wanted to see till what portion it has gone, maybe at a z axis I wanted to show numbers and maybe the distances as just a second. As you can see, it's going to the 2 pi. मुझे बस सिलेंडर की हाइट तक ही जाना है, बट एक राउंड इसने कंप्लीट भी कर लेना होने चाहिए. तो क्या करें? What should I do? बहुत ऊपर तक चला गया. I wanted to be restricted towards till the सिलेंडर की जो हाइट है तब तक ही करें. क्या करें? क्या कर सकते हैं? Increase cylinder height, sir. Increase cylinder height. That's an interesting. So कितनी करें हाइट सिलेंडर की? Same. And 2 pi. and what is that? What is that? कितनी हाइट है स्पाइरल की मेरी? 2 pi, isn't it? 2 pi. So I can define the height which is the top point. इसको मैं अगर 2 pi कर दूं, then it would be towards the maximum height. But ये तो ऐसा हो गया कि let's say for example मतलब कपड़ों के अनुसार शरीर को ढाल दिया. But what I want is कि can I fit my cloth on my body? Maybe that could be a larger task. I mean, but can I bring my spiral bit down? मतलब थोड़ा इसको थोड़ा दबा दे. Instead of Such 2 that pi, कि round. take, sir. Instead of 2 pi. क्या फिर से? Instead of 2 pi, we are taking pi. ओके, चलो वो करके भी देख लेते हैं. A by 2 pi. ओके, कमिंग बैक टू. सो अगर मैं पाई करूंगा तो मेरी स्पाइरल आधी रहेगी. जहां तक गई थी वहां तक की आधी जाएगी. somebody said very interesting part. Who said A by 2 pi? A by 2 pi. Yes. Who At the said place of height. Sandeep. is it Sandeep ji? Yes. Yes, sir. All right. So what Sandeep ji is suggesting कि भैया आप कितना ऊपर जाइए, कितनी वैल्यू मैक्सिमम तक जा सकते हैं, तो आप 1 तक जा सकते हैं. अब मुझे h को कैसे चेंज करना है? भैया देखो, मुझे तो चाहिए कि मेरी स्पाइरल पूरी एक राउंड तो एटलीस्ट घूमे. मुझे हाइट कितनी मैक्सिमम चाहिए? मुझे हाइट मैक्सिमम चाहिए मेरी 1 तक चाहिए. तो देन व्हाट आई वांटेड टू सी, लेट इट मूव टुवर्ड्स द वेरिएबल ऑफ a. a's value is from 0 to 2 pi. I want my maximum value to 1, so let me divide that by 2 pi, and let's try to see what will happen after that. And the moment you do, this is what your spiral looks.
So it has completed its turn. It has started from the bottom. It has moved. It has rotated, and now it has reached to the same point at the starting point on the जो x-axis से था, ऊपर से आप देखेंगे तो वहीं पे आपको सर्कल ही दिखेगा, the blue one. What if I wanted to have a 3 turns before it reaches to the height? Can anybody tell me that? 3 बार लपेट लेना है, मतलब 3 बार 3 सर्कल्स बना ले before reaching to the top on the same point. तब क्या करें? What can be done? The height of the cylinder is constant. A by 6 pi. A by 6 pi. Okay. Let's try to do that. तो नीचे चला गया. टर्न तो एक ही आया, पर नीचे चला गया. और कुछ? 3a by 2 pi. हाँ? 3a by 2 pi. 3a by 2 pi. ठीक है, उल्टा कर लेते हैं. So you are almost on a right track. तो ये ऊपर चला गया. पहले नीचे बैठ गया था, ऊपर चला गया. So you were right on the 3a by 6 pi. 3a by 6 pi. So if you wanted to go to the 3 turn, you don't have to go from 0 to 2 pi. You have to make a 3 turn. So it has to be from 0 to 6 pi. All right. This is how you have made a 3 turns. If you wanted to have n turns, where n is a slider, let it be start from n1 to maybe, let's say, for example, 10 turns, and the step size is 1. So what I want is, let this be a n multiplied by 2 pi. And this range is also n multiplied by 2 pi. And the moment I change the n, the number of spirals in this particular cylinder will also gonna change from 1 to 10. All right. Okay. तो वो जो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से अलग-अलग स्पाइरल बनाई थी, this is also gonna to make a सिंहासन against a king और लॉर्ड रावण के बैठने के लिए स्पाइरल बनाई थी, ऐसी स्पाइरल यहाँ पे बन गई. Right. So this is about the spiral on a cylinder. Now within the next 5 minutes, what we wanted to do is we also wanted to make a spiral on a cone. क्या करना है हमें? So let's say for example, ये तो हो गया, चलो 3 टर्न हो गए. If I wanted to create a cone, the command for the cone is कि, let's say for example, make the 2 points, the base, let's say the center of a base, that is 0, 0, 0. Any doubt till now? The things which we have created on the spiral? Just a second. And the top point is 0, 0, 1. The radius is 1. सिलेंडर की जगह अभी कोन आ गया. अब मुझे कोन के ऊपर लपेटना है इस स्पाइरल को. क्वेश्चन इज क्या करें, क्या चेंज करें? What should I change in this spiral to let it get wrapped on a cone? Angle, sir. Angle of? Yeah. Meanwhile, any doubts you have before we conclude today's session, just let me know. क्या चेंज करें ताकि ये कोन के ऊपर लपेट जाए स्पाइरल? Sir, रेडियस ऑफ spiral. ठीक है, कैसे करें? Angle 2 pi to 0, sir, I think. एंगल 2 pi to 0 करें. Reverse, I think. ओके, ठीक है. पहले तो एक It is. तो सिंपल कर लेते हैं so that it's easier to visualize. चलिए अभी के लिए इसको रिमूव कर देते हैं so that it doesn't look too much on the screen. हाँ, sorry. कर्व में मैं अगर 0 to 2 pi की जगह what you are suggesting, संजय जी? What you wanted to change? What you wanted to do? Reverse, sir, I think. 2 pi 2 to pi 0. to 0? Yes. Or in other sense 0 to minus 2 pi? Does this work? This is what you want to mean? I mean 0 to 2 pi or 2 pi to 0 or 0 to minus 2 pi is at opposite direction, and you would see that my bad.
So you can go from the, what you say, the larger value to a small value. So I'll keep it here as a minus Yes. 2 pi to z. So it's going downwards, नीचे चला जा रहा है. 2 pi to 0. 2 pi to 0, which is same as going from, let's say, going to 0 to minus 2 pi. आप अगर 2 pi to 0 करेंगे तो वो उसको undefined कर देगा. The reason is you wanted to go from maximum value to minimum, which is same as going from 0 to 2 pi. तो हमें फर्क नहीं है. The curve doesn't have a direction. So it is same as saying 0 to 2 pi, same as saying 2 pi to 0. Yeah. Monica, you were saying something? आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, स्पाइरल की रेडियस नीचे बड़ी रखे, ऊपर जाते जाते उसकी रेडियस कम हो जाए. So unlike a cylinder, जिसमें जो स्पाइरल है उसकी रेडियस कांस्टेंट है, बस हाइट चेंज हो रही थी और थीटा चेंज हो रहा था. अब प्रश्न है कि हम रेडियस कैसे चेंज करें. ऊपर नीचे तो r है, ऊपर जाते जाते वो 0 हो जा रही है. क्वेश्चन इसकी क्या चेंज करें इसमें. You are on the right direction. Question is, what should I do? The height is 1 minus a. Height is a minus 5, I think. Because, a minus 1. yeah, 1 minus a by 2 pi. Okay, let's try to do that. 1 minus a by 2 pi. ठीक है. So previously it was going from 0 to 1. Now we have subtracted from 1 minus a of and dividing that value by 2 pi. So what eventually is doing is and the value, so eventually till the 0 to 1, so the value of a is going from 0 to 2 pi. So after some time it would become greater than 1, and then eventually it going to the downward direction. This is also not working. क्या करें और? Any other thoughts you have? Again, a by 6 pi, sir. a by 6 pi, ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं. But By you see, third. what we are playing with Sandhya ji is that कि हम यहाँ पे ये जो स्पाइरल है उसके ए पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं, अनलाइक द चेंज इन दी व्हाट यू से. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गैप रह जा रहा है ना कोन की सरफेस. सिलेंडर में तो उसकी रेडियस चेंज नहीं हो रही थी, कोन पे लेने के लिए मेरे को उसको दबाना पड़ेगा, इसकी स्पाइरल की रेडियस को चेंज करना पड़ेगा. अब प्रश्न है कि करें कैसे. जी में चेंज परफेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया है. नीचे से शुरू कर रहे हैं, ऊपर तक जाना चाहिए. एच में तो जेड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं. जो दिक्कत है वो एक्स वाई प्लेन में है. जब ऊपर से देखें, इसको ऊपर से देखें तो वो जो है वो बेस सर्कल जितना सर्कल रह रहा है. अभी मुझे चाहिए कि यार ऊपर जाए तो ये जो थोड़ा छोटा होता जाए. अभी तो उसकी कांस्टेंट है 1 है रेडियस, ये कम होनी चाहिए. I think cos a minus pi, sir. Cos A minus b angle. so if you do so, तो उसका ये वाला चेंज होता है. जैसे हमने देख रहे थे भी ये एंगल यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा था, इसकी जगह पे 2 पाई पे शुरू हो जाएगा. रेडियस पे फर्क नहीं पड़ेगा. रेडियस पे फर्क पड़ेगा इफ आई चेंज द मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट. इसमें इट इज बीन by default there is this 1 multiplied by cos theta, 1 multiplied by sin theta, where 1 is its radius. इसको अगर मैं आधा कर दूं तो इसकी पूरी जो स्पाइरल है उसकी रेडियस आधी हो जाएगी. Isn't it? ये हो गया आधा. ये आधी हो गई इसकी स्पाइरल की. तो मुझे चाहिए कि भाई शुरुआत तो 1 से हो, पर जैसे जैसे ऊपर जाए वैसे वैसे ये चेंज होती जाए. तो क्या करेंगे? सो इनिशियली इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1, देन इट शुड जैसे ही हाइट इसकी थोड़ी बड़ी तो उस हिसाब से उसकी कम हो जानी चाहिए. इवेंचुअली 1 से होते 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 उसकी 0 होनी Instead चाहिए. of one slider, sir, you will join any slider.
So you see, स्लाइडर से आप अगर करेंगे, so स्लाइडर की एक टाइम पे तो एक ही वैल्यू होगी, कर्व तो पूरा बना देगा. So it has to be based on the h, the height के रिस्पेक्ट में. ये जो a है मेरा पैरामीटर, a by 2 pi है पैरामीटर, उसके रिस्पेक्ट में होनी पड़ेगी. So this has to be 1 minus a upon 2 pi. तो जब a की वैल्यू 0 होगी तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी 1, और a की वैल्यू जैसे बढ़ते 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 बढ़ते, if eventually when it becomes 2 pi, because a is changing from 0 to 2 pi, so 2 pi upon 2 pi would become 1, and then when it reaches to the top it would become once again 0, and that's what we want. So your a by 2 pi is your height, so 1 minus that of your height is what happens in a cone, isn't it? And this is what we have tried to define the cone in this particular parametric way in our last session. So if I do so now, if you see, वो जो है चोटी में बिल्कुल छोटी होती 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 फिर ऊपर चोटी में जाके 0 हो गए. अगर मुझे ज्यादा टर्न्स चाहिए, once again let's take a parameter n whose value is changing from 1 to let's say 10, the step size is 1. ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई की जगह एक तो सबसे पहले इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं. So if I want a more turns here, क्या करेंगे? अगर मुझे एक टर्न नहीं चाहिए, ज्यादा टर्न चाहिए, तो क्या करेंगे? अगर if I want a 2 turns, so this would become 2 multiplied by 2 pi. 2 बार घूमना पड़ेगा ना. Similarly, this a by 2 pi will become 2 multiplied by 2 pi, and similarly this a also needs to be 2 multiplied by 2 pi. This also needs to be 2 multiplied by 2 pi. अगर ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 बार घुमा के हम कोन के ऊपर चले गए, पर्वत के ऊपर पहुंच गए. रास्ते भी कुछ इसी प्रकार से होते हैं. See that all the temples are on the top of the mountain, isn't it? हिल्स के टॉप पे ही रहते हैं सब. माता जी, देवी हैं, सब पर्वत की टोची मतलब टॉप पे ही बैठे रहते हैं. So when you make a road to reach to the top, you also wanted to make that कि भाई रोड का जो स्लोप है वो बहुत हाई ना हो. If that is the case, then there would be a lot of torque, a motorized vehicle, or you have to use a lot of torque in order to reach on the top. पर उसका स्लांट कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई बहुत बार स्पाइरल घुमा के फिर ऊपर पहुंचते हैं, such that the angle at which it's the slope of that particular given point becomes less. अगर मुझे 3 चाहिए तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. And if I change the n, कर देता हूँ. These are the number of turns on a cone. Looks like the वो जो रहता है ना softy ice cream, where there is this machine which would release a cream, वो जो आप बनाते हैं उसी प्रकार का कुछ बन जाता है. The homework for you is create a spiral on a cylinder, on a cone, and on a sphere, on a hemisphere. आधा कटा हुआ गोला है, उसके ऊपर आपको स्पाइरल बनाना है. And so spiral should remain on the surface of a sphere. That's what the homework is for you. For this particular week. And we would like to also try to do some very interesting stuff on top of it. The idea was to play with the parametric equation, play with these 3D visualizations. On the next sessions, we would actually chop vegetables. We would chop a cube. We will chop a cylinder. Whenever we say when we chop the cylinder, it would form an ellipse. Then we wanted to see that what is the proof for that. How can I prove that when you chop the result you get is an ellipse? It looks like an ellipse, but how do I claim
It has an ellipse property. The second thing is that when we remove the pill after you have chopped a cucumber, that is a sinusoidal wave. That's what we have shown कि भाई जो elliptical path है उसको मैं roll करूं तो वो sine wave बन जाता है. Next session we wanted to actually prove, and the idea from going to 2D to 3D is that often how does this x, y, z parameter change in this 3D world. Sometimes it becomes very tricky and difficult to visualize. Can we have that more and more exercise of visualizations from a different perspective for different exercises, different tutorials? The idea was that. So I hope this what we have seen in the last sessions about creating a sphere, creating a cone, creating a cylinder from a parametric surface equations and surface command and a curve जो हमने बनाने का देखा था सर्कल को लेके. Today we have made a curves on helical curves on a cylinder and a cone has helped you to have some grasp of the visualization of how x, y, and z changes. Hopefully, the day by day, we would be able to bring create some more involved projects in that. Thank you so much for being part of this session and staying for such a long time. Thank you so much. किसी का कुछ सवाल हो, किसी का कुछ भी share करना है, of course I'm there connected. But yeah, good to see such a active responses and the thoughts you have shared with me. Thank you so much.